Let's begin with chapter number 1 from Vistas, that is the third level by Jack Finney. So usual procedure जैसे हम हर एक chapter के बारे में जानते हैं वैसे ये chapter पढ़ेंगे, starting with an introduction. Then we study a little bit about the author, किन्होंने लिखा है. We'll read about Jack Finney, and then comes a summary because we can't do book to line to line. Start over. Okay. Alright, so let's start with Vistas. Start over. Let's start with Vistas chapter number 1, that is the third level by Jack Finney. So usual procedure जैसे हम हर chapter को पढ़ते हैं वैसे हम इसको भी पढ़ेंगे, right? Which is introduction, then about the author, and then we go on to summary. So because it's a chapter, it's not a poem or otherwise. तो हम क्या करेंगे इसको एक समरी के तरह एक छोटा सा प्लॉट का समरी जो है वो मैं आप तुमको दे दूंगी so that you have an idea what chapter is saying. Obviously समरी के अंदर जो important lines हैं chapter में वो हम cover करेंगे, कुछ important चीजें जो आपको पता होनी चाहिए exam point of view से भी and otherwise also. And then comes the question and answer part where some of the very important questions, especially with this chapter, because इस chapter में questions को answer करते हुए ही आपको clarity आएगा कि वो कि जैक फिनी ने लिखा क्या है, subject matter क्या है chapter का. So that's how we're going to proceed. So let's begin with the introduction session. What is the third level about? So I think it's pretty much as confusing as Going Places is, right? So आपकी book में जो दूसरा chapter है Going Places आपने पढ़ा होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा confusing है और पता नहीं चलता है कि fantasy कहाँ है और reality की कहाँ पे बात हो रही है, right? It's the same with this chapter also. However, थोड़ा सा कम है लेकिन you see an intersection of time and space, you see an intersection of fantasy and reality, so that is imagination and reality. So chapter start होता है इस line से जिसको बोलते हैं the line is, have you ever had any curious experience that others find hard to believe? So it's a hint for you, like what is this chapter trying to say? So chapter basically बोल रहा है कि आपने कभी एक ऐसा experience किया है that whenever you're telling someone, people find hard to believe, people find hard to accept, क्योंकि reality में ऐसा नहीं होता है, लोगों के साथ नहीं होता. For example, there are many ghost stories you get to hear. बहुत सारी stories हैं जहाँ पे आपके friends बोलते हैं, I was sitting in a room and the cup started moving, या फिर windows started, vibrating or whatever. So ये सारे experiences जो हैं हम believe नहीं करते हैं क्योंकि they're not real. We don't think that they're real and they can happen in reality. The third level is also about one such experience which people would say that it's not real. It's a fragment of your imagination. यानी कि आपने imagine कर लिया है, ऐसा कुछ reality में नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता. So what happens in third level is हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है एंड विच हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स हैं. किसी से भी पूछ लीजिए, सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 लेवल्स हैं, लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट जो है गोज टू द थर्ड लेवल विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी थर्ड लेवल ऑफ एनी अदर सबवे और एनी अदर ट्रेन स्टेशन. ये जो थर्ड लेवल है वो 1890s के अंदर सेट है और 1890s के अंदर सेट नहीं है सिर्फ, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स का डेट्स, लोगों के ड्रेसेस, वहाँ पे सारी चीज़ें वे फ्रॉम वेरी स्मॉल डिटेल्स लाइक पॉकेट वॉचेस गोल्ड की, और वो सारे के सारे जो डिटेल्स है वो आपको एक पुरानी टाइम की याद दिलाते हैं. इट्स लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ 1890s 19th सेंचुरी का एक सेटअप है एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव क्योंकि अगर न्यूज़पेपर का डेट भी 1984 में सेट होगा तो कोई भी आपके फ्रेंड अगर आप उनको बताएंगे कि आई वेंट टू दिस प्लेस विच फ्रॉम इन 1894 या फिर मैंने टाइम ट्रैवल किया, सो नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू, राइट? So that's what happens with Charlie as well. So anyway, when we talk about the third level, it basically is a fantasy tale, right? However, I like to believe that Jack Finney is trying to touch upon some sensitive issues, right? Some sensitive issues like how, for that matter, the issue of escapism.
Escapism, how people do not really like their realities. People try to escape their realities, or people try to imagine things in a different way, ताकि उनको contemporary world का या फिर जो reality में जो chaos है, जो problems है, fear, anxiety or whatever, वो experience नहीं करने पड़े, या फिर उस anxiety से, उस fear से उनको एक recluse मिल जाता है, उनको एक escape मिल जाता है, temporary या फिर prolonged escape, जिससे कि उनकी life थोड़ी balance होती है. They feel happy about life and they feel happy about things, right? So protagonist is also one such person. Though it is from Charlie's point of view, first person narrative है ये, लेकिन जब आप आगे जाते हैं इस पोएम इस चैप्टर के अंदर, तो आपको क्या पता चलता है कि आफ्टर यू रेड इट, what becomes important is the point that maybe वो सब कुछ imagine कर रहा था, maybe नहीं, certainly he was imagining things because this can't happen in reality, and also वो कितनी zeal से और कितने belief के साथ उसको imagine कर रहा था, वो cross check कर रहा था हर एक छोटे से छोटे detail को, जिससे उसको proof मिल जाए that his fantasy world is not the fantasy world but the real world, right? So that he finds a purpose and recluse in life. It's also when Jack is trying to comment upon how chaotic, how anxious this world has become, right? कितनी difficult हो गई है हमारी सबकी life कि हम लोग easily peacefully रह नहीं सकते हैं. We can't think about good things and all we have to deal with is fear, anxiety, so on and so forth. So third level is a fantasy tale which tells you a very interesting story. I personally like it very much. And the idea that time or space को कैसे साथ में blend कर दिया है. And I think that's Jack Finney's speciality, because अगर उनके बारे में पढ़ें तो he's an American author जो कि sci-fi लिखते हैं, उनकी science fiction लिखते हैं और thrillers लिखते हैं basically. So like with a lot of climax, with a lot of conflicting plots and very very interesting ideas is something Jack Finney writes about. उनकी books के ऊपर बहुत सारी movies भी बन चुकी हैं और multiple times published भी होती हैं. जैसे I think Magazine of Science Fiction was the magazine जिसके अंदर the third level published हुआ था for the first time, right? So I think it's very important to read this chapter precisely because it's written in a very nice manner. So आपको अगर आप if you want to be a writer, if you want to write, it gives you a very good idea as to how you can appeal to people and write in a way that people really want to read it. So after let's explore this fantasy of writing and move on to summaries, right?